Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ravi sir. Today, I'm here welcoming all for this session on MSME. My name is Mir Sakla, and I'm a CA by profession, working in a Paris hospital as an executive manager, AM assistant manager in the Paris hospital, and I'm handling all the financials and the statutory part. I'd like to welcome our speaker, Honorable Speaker Ravi Manatia. The person, whatever we tell about the sir, is less. The CA by profession, entrepreneur by passion, author by choice, and the strategic thinker. Sir has been the founder of Momodia and Company and Masters Inside LLP. I've been the founder of it. And along with it, Sir has been the author and is writing books actively. And the best of which the Sir has is the business succession planning by the Taxman. Sir has a total of 12 years of experience, and we are really happy and delighted that Sir will be sharing his insights on the topic. Sir, can we please start, sir? Thank you so much. Thank you so much to the Institute of Chartered Accountants, to the committee, to all the team who have supported us. Thank you for such a wonderful introduction, Bhai, and really pleased to become a part of this discussion. So I'll begin my presentation. Being it is on a virtual mode, I request all the participants to be active in the chat box, to be active in responding, so that I can see the reaction, so that I'll be actively communicating rather than just a session. We can keep it an interaction where you can also raise up the question. We can also discuss in detail wherever you feel like that you need a more clarity. I will go for this. So what is the best language? English Hindi mix, or only English? The reply on the chat box, please. But this depend on you, sir. However you want, you can do that. Sorry. Sir, it's depend on you, sir. However you want, you can deliver, sir. Okay. Thank you. So to begin with the session, I'll just start my PPT and will walk you through with my understanding about the succession planning and how the things are into the succession planning. So I really welcome you all from the bottom of my heart on this platform which the institute has provided us. The committee of MSME and the startup has provided us, where I'm going to discuss today about the business succession planning, its importance in the MSMEs. That how as an MSME हमको इसको succession planning को कैसे देखना चाहिए, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, इसको किस तरीके से और बेटरली समझा जा सकता है, और क्या चीजें हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में इसके थ्रू इनकॉर्पोरेट करके अपनी प्रैक्टिस को और बेटर कर सकते हैं. तो पहले तो मैं आपको इससे स्टार्ट करूंगा दैट सक्सेशन प्लानिंग इज अनलॉकिंग मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस प्रैक्टिस for the chartered accountant in the next 10 years. You will be surprised to know that this is very precise data which I have collected, and I really feel the way that India is progressing, the way it is happening, we are able to achieve this, that we'll able to create this market of 5,000 crore potential for the succession planning practice only for the chartered accountants in the next 10 years. Might be you will not believe it, but I believe that by the end of this presentation, I'll make you understand that how it is, why it is, and at the end, you will also say that you will become a part of it. That is what I wanted to get out of today's discussion. So what is succession planning and how the era has started? तो मैं बहुत ही आध्यात्मिकली आपको स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप देखोगे सक्सेशन प्लानिंग की जो प्रैक्टिस है वो तो श्री राम के जमाने से और कृष्ण के जमाने से चलती हुई आई है. That we all face these kind of succession challenge right from the very beginning, जहां कौरव पांडवों की भी लड़ाई सक्सेशन के कारण ही हुई और राम जी को वनवास भी सक्सेशन के कारण ही जाना पड़ा. Improper planning of any estate, any wealth creates a mess, and that creates a story of the succession planning. And it is not new for today's era. It is very badly we are facing this challenge. Very इंसिस्टेंटली हम लोग इन सब चैलेंजेस को रेगुलरली फेस कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे बॉलीवुड ने भी बहुत सेलिब्रेट किया है सक्सेशन प्लानिंग. मूवी लाइक स्वर्ग, बागबान, कभी खुशी कभी गम, हम साथ साथ हैं, दे ऑल हैव डिपिक्टेड दैट हाउ द सक्सेशन प्लानिंग हैज बिकम अ बिग चैलेंज. कैसे बेटा छोड़ के चला गया, कैसे बेटों ने सुना नहीं, कैसे भाइयों के बीच में तकरार हो गई, कैसे उनके डिस्कशंस और ज्यादा बढ़ गए. दिस ऑल हैज बिकम अ रिजल्टेंट टू अस, which leads to the improper planning, which depicts as that how the improper planning can collapse the complete empire, complete business, and complete family itself. So succession planning is nothing new.
but it is all happening from very back. All we have to understand is that as a practitioner, हम अपने आप को इसमें कैसे establish कर सकते हैं, what are the areas and how we can get the things in such a way that we are able to contribute to the society for this purpose. That is what today's purpose of our discussion is. So what I'm going to do today, so on today's session, I'll tell you why to plan for the succession. Why succession is important, why succession is important for us as a professional, that we should understand this. How to plan for the succession and how it becomes a catalyst for our professional practice. When is the right time to plan for it? And our approach, that 5-step approach that I'm going to tell you, that our approach to deal with it, that how we should deal about the succession. So we'll talk about why, how, when, and approach to deal with it. So what we are going to do today, in 2 घंटों के अंदर, I'll try to make you conscious about the succession planning, that what it is, how it is, and why, and how you should plan, and how you can start your professional practice into the succession planning domain. We'll have some interaction and fun. I'll give you some important secret of the big family houses, that how they have run their families so well for the generations, and what are the challenges that next generation don't want to come into a business, how they should face it, how they should answer these kind of challenge, how we should answer these kind of challenge which our client is facing. So the importance and the why, when, how, what, along with these things, that is what I'm going to plan for you today for this 2 hours that we'll discuss in detail. So my journey before I begin this, so that I can make you understand that why I'm talking about succession, why succession has been so keen to me. So 2011, where I've started my practice, I passed my exam and I started my practice. In the same year, I've started my practice with 2 of my friends, and we 3 of us have started the practice. 2012 to 16 becomes a struggle year for us, where everything was becoming very struggling. We are trying to set up the practice. There's no background in the family. There is nothing that gives us the support, except that family has been stood with us. But we have established everything with our own. जैसा आप सब लोगों ने भी अपनी practice को establish किया होगा. 2016 has become a devil year for me, because from 2012 to 16, I realized that our partnership is not working and we are not able to get that kind of good traction while working, or synergy with working with each other. So I've separated with them, and in the same year, I lost my father in a train accident in 2016 itself, just after the 2 months of my breaking of the partnership. That led me to thinking and to understand that everything has created a big mess into my life. 2016 to 19 has become the year where I have settled myself. I have understood that how the things are happening. मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूं, अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करूं, अपने चिल्ड्रंस को कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको साथ में लेके चल सकता हूं. I have been the most elder into my family. That gives a lot of responsibility itself, which I tried to serve. And by the end of the 2019, I realized that succession एक बहुत बड़ा challenge है. अगर कहीं sudden demise हो जाता है, there's a lot of challenge that we face. ये मैंने नहीं देखा, ये आपने नहीं, हम सब लोगों ने देखा है, या तो हमारी फैमिली में, हमारे नियर बाय में, हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे क्लियरली पता लगता है कि lack of succession planning can lead to a miserable things into a family and that structure. 2019 I given a thought कि चलो इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, and 19 become that year where we all have faced the COVID, and suddenly everything has again collapsed. That whatever I was thinking was not working now. So I was thinking कि अगर if I'll be passed away, then what will happen to my knowledge, what I've gathered till now. So I've started writing about it. Gradually that writing has taken a shape, and that has become a book that has been published by the Textmen. I'm really genuinely thankful for them for publishing my book. 2020, I started practicing into this domain purely, and from 20 to 21 to 25, I'm just continuously doing this and helping people more and more about it, and writing about the succession, making people aware about the succession, helping people, helping business owners, and helping my chartered accountant and fellow members that how they can also become a part of this amazing practice in their regular practice domain, how it is going to help them. So I end up my journey saying, if you are not falling, you're not pushing your limits. And if you're not pushing your limits, you're not maximizing the potential. What I feel is that we have to maximize, and we can see that there's always a hope, there's always a next way through which we can do better and reach to the next level. So by this, with my journey till now in 2025, I started creating this ecosystem where I feel that succession is not working. A single profession cannot lead it. There's a lot of other professionals who requires to become a part of it. CA, advocates, CS,
trusteeship companies, investment bankers, insurance broker, wealth advisors, investment bankers, strategic advisors, IPO consultant. We all need these kind of people to become one and give this kind of services to our client, which can give them the next potential. By this journey, I passed out with this. The fourth edition has already came of the book. I started sharing my book content everywhere, wherever I can, and just wanted to talk about it and really wanted to talk about this, that if the death is inevitable, one should try to die well. This is the most important thing, and this is the first chapter of my book, where I always say that अगर मरना सबको ही है, तो क्यों नहीं इसको एक बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया जाए। आपको पता नहीं है कि डेथ इज व्हेन इट इज गोइंग टू कम, ना मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता दैट व्हेन योर डेथ इज गोइंग टू कम टू अस। बट इफ वी प्लान फॉर इट, वी कैन डेफिनेटली लीड समथिंग गुड फॉर आवर loved ones, for our family, for our kids, for everybody. This is the message that we have to convey to our client, and we also as a chartered accountant have to understand that we give the direction to our client that after a reasonable wealth, after a reasonable understanding, give him aware that death is inevitable and we should plan it, because whatever you have grown today should not fall in back. आपको पता है प्रमोटर को या किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी कंपनी के फाउंडर को, प्रोप्राइटर को, पार्टनर को सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि उन्होंने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट करी है, वो हीरो तक पहुंच गए। अब वापस कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि वो हीरो वाली जर्नी वापस जीरो पे आ जाए। That is something which is very important to understand by all of us, that we should always guide our client regarding this, and we should also understand this. To give this more detail about it, as I've told you in the beginning, that I'm a bit a mythological person. I feel that Garud Puran एक रिचुअल है। जब भी किसी की डेथ होती है नॉर्थ के अंदर, आई हैव सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली जहाँ पे गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है 15 दिन के लिए, जब भी डेथ होती है उसके बाद। इस गरुड़ पुराण के अंदर दो तरह की चीजों का बहुत ही क्लियरली डिपिक्शन है। एक है सर्प, एक है गरुड़। सर्प वो है जिसके ऊपर, शेषनाग के ऊपर लॉर्ड विष्णु लेटे हुए हैं, और गरुड़ उनका वाहन है जिसके ऊपर वो बैठ के सब कुछ देख के आते हैं। By this I feel that केवल मैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस इतना नहीं है कि उनको ये बताना था कि गरुड़ और सर्प की इंपॉर्टेंस है, बट मुझे लगता है इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि ये बताना चाहते हैं कि सर्प जो होता है वो एक रेप्टाइल भी होता है, एक लिमिटेड भी होता है, बट गरुड़ जो है एक बर्ड आई व्यू होता है। बहुत बार जो बिजनेस ओनर हैं और हम एज एन सीए, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं अपने रेप्टाइल व्यू के थ्रू कर रहे होते हैं, अरे भी इनकम टैक्स की डेट आ गया, जीएसटी की डेट आ गया, हम इतना ही करना है, इतना ही करना है, तो हमें एक लिमिटेड दिखता है। लेकिन बर्ड आई व्यू लिमिटेड नहीं होता, बर्ड आई व्यू एक एक्सपैंडेड व्यू होता है, जहां पे सब कुछ दिखता है कि आगे क्या होना चाहिए, इसको कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, हम इसको कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने अपने व्यू को रेप्टाइल व्यू रखा, केवल ऑपरेशंस में अटके रहे अपने बिजनेस ओनर्स, जो आपके क्लाइंट्स है वो, और उन्होंने अपना गरुड़ व्यू नहीं लिया, that has become a big threat for anybody, and for that business especially, and for that promoter. जिन भी लोगों ने गरुड़ व्यू लिया अपने लाइफ के अंदर, they have become a big conglomerate today. They are Reliance, they are Tata, they are Apollo, they are Adani's. They all have become a part of this journey itself only. That when they have started, they are very small, but gradually they have developed by themselves and they have reached to this level. That is a journey that every entrepreneur has to live with. And that is my suggestion by this Garuda Puran, that we as an consultant to our client, as an advisor to our client, we should advise them that it is very important to understand that succession is important and Garuda view is very important for any business, for any promoter, and they should take it in their life. That is the first advice that we should give to our client. So now this is what the context I wanted to set regarding the succession. If all the context is set, and if you all are in, then we can go into the detail about the technicalities of the succession. That what is succession planning? Succession planning is nothing but a smooth transition of your business from one leadership to another, that can be done within the family or outside the family, so that the business can plan to its continuity and smooth functioning in a proper and systematic way. That is what the succession is. As simple it is. कोई भी बिजनेस का ट्रांजिशन एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के ऊपर जो लेके जाता है, उसे हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। अगर वो विद इन द फैमिली हो जाता है तो उसको फैमिली सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। अगर वो आउटसाइड किसी के साथ में किया जाए तो उसको बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। ये दोनों ही सक्सेशन प्लानिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला है और इंपॉर्टेंस रखते हैं। So why to plan for it? There's a lot of entrepreneurs came to us. There's a lot of clients come to us. They ask you that why should I plan for the succession?
Is it really needed? So I'll give you some reasons and logic that why one should plan for it. तो ये सारे रीजन तो वो रीजन है which everybody knows that life is uncertain, long term strategy के लिए बहुत important है, it is very important for the tax planning, it helps you to find the right kind of successor, it provides you a better career opportunity, it gives you a employee commitment, it gives you a loyalty bonding. These all are the things that really support that succession is very important for any entrepreneur, for any of our clients. Now इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम इसके बियॉन्ड जाके सक्सेशन के ऊपर बात करें अपने क्लाइंट से. वो बात क्या है कि अगर उसने प्लान किया सक्सेशन और प्लान नहीं किया, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला. अगर वो प्लान ट्रांजिशन हुआ और अनप्लान ट्रांजिशन हुआ तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इसको बहुत क्लियरली समझाते हैं अपने क्लाइंट को. तो क्या करना चाहिए, मैं एक बॉस्टन कंसल्टिंग की स्टडी लेके आया हूँ. दिस इज नॉट डन बाय मी, दिस इज डन बाय द BCG, द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. दैट स्टडी सेज इफ वी हैव अ प्लान ट्रांजिशन, then that reduce the revenue on capital employed by 14%. If there's a planned transition, that increase the 28% of that company market capitalization. If it is a planned transition, then the EBITDA of that company get increases by the more than 5%. I know you'll be surprised to know this कि कैसे एक profit margin 5% तक बढ़ सकता है, कैसे एक मार्केट कैपिटलाइजेशन 28% तक बढ़ सकता है अगर केवल प्लान ट्रांजिशन हो. तो आई गिव यू एन वेरी स्मॉल एग्जांपल. आपके आसपास जो भी कोई भी ऐसा बिजनेस है जो मल्टी जनरेशनल चला है, अगर उसने मल्टी जनरेशन वर्क किया है तो you'll see that they have a better chargeability in the market, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रांड वैल्यू है. बट वो ब्रांड वैल्यू के साथ में एक वेल सक्सेशन प्लान इन हैंड है. अगर आप देखेंगे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और बेटर है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं. Again, it is not about the brand, but it is their transition has been done well. They have addressed all the things in the right time. And that has given a weightage to that company, weightage to that promoter, weightage to that family to increase their market capitalization by 28% just by planning of the succession. So it's become very critical and important for all of our clients that we should advise them that succession planning is really important and needed. So I'll give you one more context about it. We all have been following this with the Modi ji's vision that by 2047 we all will become 30 trillion economy. I am a deep heart supporter of this. Not for the Modi ji, but I am saying that the India will create this kind of a vision for us. And I believe अगर इंडिया अगर इतना बड़ा विजन रखता है तो इस GDP को इतना बड़ा बढ़ाने के लिए कौन कंट्रीब्यूटर बनेंगे. That is the next slide. The slide shows कि अगर फैमिली बिजनेसेस अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड कि किसने कितना टाइम कहाँ पे और कितना ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट किया है, आप वो देखेंगे that India is at the top as 79% of the GDP has been contributed by the family owned businesses. And if 79% of the GDP has been contributed by the family owned businesses, अगर हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाते हैं तो डेफिनेटली इन लोगों का कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा होने वाला है. Their size is going to increase like anything. You'll be surprised कि कैसे हो सकता है 79% GDP का contribution एक family owned business. तो Reliance is also a family owned business for your understanding. Adani is also a family owned business for this category. So that proves that succession is very important. अगर इन लोगों ने सच में सच्चे से प्लान किया तो हम इस ट्रांजिशन का पार्ट बनेंगे and we'll able to grow from here. अब एक और चीज बताइए, अगर इन सब क्लाइंट्स को अगर सक्सेशन प्लान करना है तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिग फोर के पास जाएंगे. Do they really get a solution? 79% GDP का कंट्रीब्यूशन, उसमें से 70-80% SMEs हैं. उन 70-80% SMEs में से केवल 10 से 15% SMEs ने अपने आप को प्लान कर रखा है सक्सेशन के लिए. 60-65% of the bracket is still vacant. There is no one to plan for it for them. And I really feel as a practitioner we have a huge scope into it. बहुत बार लोग मेरे पास में ये भी लेके आते हैं कि सक्सेशन जो है ना, that is not about the chartered accountant. They're about more the lawyers or the big fours. They'll do this. There's advisory services. Only those big people can do about it. What my understanding is कि सक्सेशन में 3 तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. वन इज लॉ अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज देयर पर्सनल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फैमिली. Chartered accountant, as a chartered accountant, as a small medium practitioner, we understand the law, we understand their business integrities because we have been longly associated with them, and we are also personally attached with our client. We know what is their family structure, we know who thinks why, what are been the constant for their families, what have been faced by their families. We all have understood this.
As a lawyer understand the law angle and the personal angle, but they miss the business angle. The big four, they have the law angle, they have the business angle, but they miss the personal angle. एंड आई फील दैट जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्रिएट करके अच्छे से सर्व कर सकता है अपने क्लाइंट को, दे आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर द स्मॉल मीडियम प्रैक्टिशनर्स हु कैन सर्व देम वेल एंड बेटर फॉर दैट पर्पस. So to take my discussion forward, I'll say that succession planning of wealth and succession planning of business are two different things. वेल्थ की कैसे भी प्लान किया जा सकता है, क्योंकि वेल्थ एक पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हमने इकट्ठा कर लिया. उसको आप चाहे विल करो, गिफ्ट करो, ट्रस्ट करो, किसी भी तरीके से प्लान कर सकते हो. But succession planning of business is a planning of a future which we are going to generate. The future is going to come today. So we have to be very cautious in understanding that we wanted to plan for the wealth or we wanted to plan for the business. And maximum family owner businesses इस दोनों के बीच में segregation नहीं कर पाते. That creates a rift between them. And we have to advise our client for this purpose that wealth को तो आप चाहे सबके अंदर equal distribute कर दो, लेकिन business should be given to a competent person in a right way, in a professional way, so that that can grow well within the family itself. Going forward, to understand the better need about the business, we have to understand that there is a four kind of need for any business: tangible need, intangible need, entrepreneurial need, and manager. ये सबका combination मिलके एक family owned business बनता है. Sorry. इस फैमिली ओन्ड बिजनेस के चारों स्ट्रक्चर को अगर हम लोगों ने एड्रेस किया सक्सेशन प्लानिंग के अंदर, दैट इज द राइट फिट एडवाइस फॉर आवर क्लाइंट ऑलवेज. So by this, I'll put my first case study in front of you. That what happened, that there's a two brother, Karthik and Suresh. They are into a partnership, sharing 40% of their profits. Second generation, Vijay has came into a business, and his younger brother Sanjay has also joined the business, which share the 5% of a business. The second brother, Suresh, having a son, Vaibhav, he has also joined the business with having a 5% equity, and daughter having a 5% of equity. तो ये पे एक फैमिली स्ट्रक्चर है. ये फैमिली स्ट्रक्चर में एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, से 1000 करोड़ बिजनेस, बट वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है. पार्टनरशिप की परसेंटेज शेयरिंग इस तरीके से या ओनरशिप शेयरिंग इस तरीके से. अब उनको दो चीजें डिस्कस करनी है. उनको एक लैंड एक्वायर करना है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो दे आर कंफ्यूज कि उनको लैंड कहाँ पे एक्वायर करना चाहिए. सेकंड है प्रीति की मैरिज है, जो सुरेश है उनकी डॉटर है, उसकी मैरिज है. उस मैरिज के फंक्शन को किस तरीके से प्लान करना है, इन दोनों चीजों को प्लान करना है. और इन दोनों चीजों को प्लान करने के लिए द वन हु कंट्रीब्यूट, द वन हु रिक्वायर्स द थिंग इज दैट द बिजनेस एंड फैमिली, दे बोथ शुड सिट टुगेदर एंड डिसाइड अबाउट इट. मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो चैलेंज है वो यही है दैट दे डोंट फॉलो दिस 3 सर्कल मॉडल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये केस स्टडी केवल हमारी या मेरी केस स्टडी नहीं है, ये सब फैमिलीज के अंदर ऐसा ही हो रहा है, आपके हर क्लाइंट के अंदर ऐसा ही हो रहा है. बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है, दैट क्लाइंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ क्लोजली दे आर एसोसिएटेड एज एन फैमिली, एज एन ओनर एंड मैनेजर. जब इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर देते हैं, इन सब तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन करके फिर हम इनको बोलते हैं कि आप सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं, देन दे आर एबल टू गेट द बेटर सॉल्यूशन ऑफ इट. हाउ, दैट एज अ मैनेजर दे हैव टू आंसर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. As an owner, they can raise a question. As a family, they are emotionally attached. They all three circles are different, and where they intersect with each other, they creates a lot of rift and confusion between the family. So it is important to understand before advising to our client कि ये जो दोनों मुद्दे इन फैमिली ने उठाए, लैंड एक्विजिशन को और शादी का, they are two different topics. They are two different people who should address these kind of things. Lend wala is a business decision which Karthik, Suresh, or any of the young generation who's active into a business can take. But the second decision, the marriage, the Karthik, Suresh, the young generation, along with their wives, along with the Karthik and Suresh wife, should also join that discussion. It should not happen on the dining table. Maximum of the time, the problem is succession. सबसे बड़ा challenge है that we all make these kind of decision, or all the clients make these kind of decision at the dining table. This should not be the case. We should understand that the clarity of this 3 circle model give a clear depiction that how the succession is going to be, how the family can structure the things well. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज और बताते हैं आपको. जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, दे आर वेरी डिफरेंट थिंकर्स. इनको हम जेनजी बोलते हैं. तो हमारे क्लाइंट के अंदर जो नए बिजनेस के अंदर नए जो लोग बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके, दे आर जेनजीज. दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर आज आप ये देखेंगे कि मेरी जनरेशन है दैट इज जेन वाई, इससे पहले जनरेशन इज जेन एक्स,
अब जो नई जनरेशन आ रही है Gen Z, the difference between the thought process and understanding and the way they wanted to contribute and wanted to become an addition and wanted to contribute to a family is a very different way. And we have to understand this way. तो Gen Zs वो हैं जिन्होंने 1997 के बाद में born हुए. They are high digital friendly people. They are very idealistic and follow an idealism in their life that they need a reason for any kind of thing, whatever they wanted to do. Even they wanted to join your father's business, they need a reason and logics behind it that why they should join their father's business. So that is something which we have to understand that the next generation who is going to join, who are they? एंड इनका जो ये एट्रेट जो मैंने अभी आपको इस टेबल के अंदर बताया कि अगर उन शादी के लिए हमसे पहले वाली जनरेशन से पूछते थे तो बोलते थे कि जैसे पेरेंट्स ने कर दिया वैसा कर दिया. हमारी जनरेशन बोलती थी कि एज पर माय विश, मैं अपनी इच्छा से डिसाइड करूंगा कि शादी करनी है नहीं करनी. ये जैन दी ऐसे बोलते शादी क्यों करनी है. क्लाइमेट हमारे पहले वाले जनरेशन के लिए कोई कंसर्न नहीं था, हमारे लिए उतना था जितना कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट थी. अब जेन जी जो है वो प्रो टू क्लाइमेट प्रोटेक्शन है. आप देख लीजिए आजकल जितने भी फॉर एग्जांपल आईफोन अपना एडवर्टीजमेंट ऐसे करता है कि वो क्लाइमेट को बचा रहा है. ESG has become a very important thing. Why? Because the nature also need it and Gen Z understand it very well. They don't want it to lose this. Earning. Gen Z, Gen X has always been focused on earning more. Money focused people. Second generation, growth focused. Gen Z, they are purpose focused people. So we have to understand these attributes because this will define and make our client understand that how they can proceed for this. So when to plan for the succession? When is the right time to plan for the succession? Just wanted to understand that can the participant put the message in between the chat bot at the chat meeting team? Can anyone put the message into a chat bot so that I can understand that you're understanding my Hello? things? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, my voice is audible, by. Yes, sir. It's audible, sir. Totally audible. So, wanted to check whether the participant can put the message in between or not. Sure, sir. Sure. I will just let you know. In case if it breaks in the way, I will just let you know. Okay, okay. So when to plan for the succession? The second question comes is that when to plan for it? When is the right time to plan for it? Chinese product तो बंद हो गए, but Chinese कहावत इसमें आजकल बहुत popular है. I say that the best time to grow the plant was 20 years ago. The second best time is today. We must see that this is the right time and this is the right pace where we should start planning for the succession and we should advise our client to plan for the succession. Business life cycle के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है जहाँ पे आइडिएशन स्टेज होता है, इसके बाद में स्टार्टअप स्टेज होता है, फिर उसके बाद में ग्रोथ स्टेज होता है, फिर उसके बाद में मैच्योर स्टेज होता है. इन चारों स्टेज के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बट लास्ट स्टेज द एग्जिट एंड द रिटायरमेंट नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट इट. Nobody wanted to lose that control. Everybody wanted to be staying with that. So my message is that this session is especially for this fifth point, exit and retirement phase, that how to plan for it in a better way. So how to start? What is the process to start with it? So before we start, we should understand few more things that I've already told you. There is a four kind of asset that we are going to deal in it: physical asset, financial asset, intangible asset, and digital assets. So what is the objective of the succession need to be clearly defined with our client. We have to understand with our client that what is the objective of their succession. Is it protection of their wealth, or it is the growth of their health, or it is a transfer, or the combination of these things? That's what they want. Now, once you get this understanding, now this five-step approach comes into a picture. This five-step approach clearly defines, and this has been created by me, where I have seen and experimented at many family offices, at many families, that they have successfully completed these five steps and they are able to do the succession pretty well. So what are the five steps? The first step is owner's vision. Second is family constitution. Third is aligning the business and family. Fourth is successor identification and grooming. Fifth is their transfers of asset and exit. A five-step approach is a defined approach which helps a lot of client of mine to get a proper succession plan in their head.
To take it into a detail, I'll quickly walk through with the every step. Ownership vision. Ownership vision means clearly defining that what the ultimate vision of the owner. Because the next generation wanted to understand this. They wanted to join only those businesses who are having a clarity about their business, why they wanted to do this. So vision clarity, mission clarity, goal clarity, passion and purpose clarity. These all need to be done very clearly in a family business. Because clarity brings the focus brings the energy, and energy brings the result. And the result comes when we have a clarity that where we wanted to reach with the business. That means the owner vision includes a business plan, org structure, a team alignment, and a system in place. These four things is required to create this owner vision clarity. Once this is done, I'll take you to the another case study. आपको पता है टाटा फैमिली जो है वो जोरोस्ट्रियन फैमिली है. जोरोस्ट्रियन फैमिलीज कौन सी फैमिलीज होती हैं? पारसी फैमिली का एक मतलब एक पैटर्न होता है जो ये डिफाइन करता है कि वो अपना एक मंत्र फॉलो करते हैं, गुड थॉट गुड वर्ड्स एंड गुड डीड. गुड थॉट गुड वर्ड्स एंड गुड डीड, ये सारे की सारी चीजें उनके एम्प्लॉयज वेंडर हर जगह के ऊपर ही फिक्स होती है. ये कैसे होती है? जब वो फैमिली फिलॉसफी जब बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं, जब वो फैमिली फिलॉसफी को लेके मर्ज करते हैं, फिर उसका जब उसके थ्रू अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, दे ऑल बिकम वन एंड दे आर एबल टू डू इट. क्योंकि उनका विजन अलाइंड, उनको मिशन पता है, वो क्यों कर रहे हैं ये पता है, उनका पर्पस क्या है, उनको क्यों करना है, किस तरीके से करना है. एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड वेरी वेल. दिस दिस केस वी ऑल नो. आपको पता है जब ये केस हुआ था, जब ताक में जब हमारे टेररिस्ट अटैक हुआ था, सब लोग निकल गए थे, धीरे धीरे करके निकल रहे थे उनके वहां से, लेकिन कोई भी उनका टीम मेंबर उस ताज को छोड़ के नहीं निकला. जितने भी टीम मेंबर्स थे, जितने भी लोग सर्वेंट्स जो भी सर्व कर रहे थे टेबल्स के ऊपर या उनके फ्रंट डेस्क के ऊपर, जो भी उनकी टीम थी, जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, दे ऑल हैव स्टूड इनसाइड टू प्रोटेक्ट देयर customers. Ratan Tata का खुद का स्टेटमेंट है that he called himself called to the hotel manager and said that leave from there, and they have denied that हमारे लिए customer first है. Once the customer will be leaving from here, then only will come out of it. By this decision, there's a lot of employee got injured, and for some of them has been no more. But this value system has created by the Tata has given a good value to the complete system. ये टाटा की वैल्यू थी जो उनके गुड थॉट गुड डीड और गुड वर्ड से आई, एंड दैट हैज बीन प्रोवोक्ड, दैट हैज प्रोवोक्ड द एम्प्लॉइज टू बी दिस वे एंड हेल्प देयर कस्टमर फर्स्ट अप्रोच. So this is the importance of planning a vision in time. The second level comes in where we talk about the family constitution. Family constitution means फैमिली काउंसिल स्टैब्लिश करना, फैमिली असेंबली बनाना, फैमिली एसोसिएशन करना, फैमिली फंड क्रिएट करना और एक फैमिली ऑफिस का सेटअप क्रिएट करना, एक सीएक्सओ लेवल सेटअप क्रिएट करना. दैट इज द फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन. जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हम इनके साथ में थर्ड चीज स्टार्ट करते हैं, विच वी से अलाइनमेंट ऑफ द फैमिली बिजनेस विद द फैमिली. फैमिली और फैमिली बिजनेस के बीच में जो अलाइनमेंट फिक्सेशन होता है, इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ फैमिली एंड बिजनेस. That is their core value alignment with the management philosophy. Their business commitment becomes a strategic commitment for the business. Their family vision becomes the business vision for the business. Their family enterprise planning becomes the business strategic planning. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. There's a lot of people who think that the business and family are two different things. But I believe that the business owner lives two things all together. वो अपने बिजनेस में भी घर को सोचता है, अपने घर में भी अपने बिजनेस को सोचता है. And that gives me this clarity that this is a very important step to bring an alignment between these two things. Once this is done, then the successor identification and grooming is important. Successor identification, grooming, once it has been done, then the grooming is having a lot of areas to which the new generation can be groomed. Education, coaching, mentoring, experiential learning. These all have become a way through which the grooming can be done to the next generation. And it is very important for any new generation to get groomed, because जो भी पुरानी जनरेशन ने 50 साल में 10 साल में अर्न किया है, उस 10 साल 50 साल की अर्निंग को 3 से 4 साल के अंदर सीखा जा सकता है अगर उनकी ग्रूमिंग राइट हो. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, दिस बिकम अ फास्ट पेस थिंग सो दैट दे कैन लर्न वेल एंड ग्रो इनटू द राइट फील्ड.
So one more thing before we take the fifth step, which is like understanding about the law. Once all the four step has been taken into place, the first step is vision alignment. Second is family constitution. Third is alignment between the family and business. Fourth is successor identification and grooming. Once all this will be done, then the estate planning comes into a picture. These are the approach through which you deal with the succession, and it gives a right fit solution to our client. Okay. So before we take the forward, let's quickly understand that liquidity management has also become a very important thing. अगर आप किसी भी फैमिली बिजनेस में जाएंगे तो बोलेंगे कि अगर हमको ये सक्सेशन प्लानिंग करनी है एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बोलेंगे अरे भैया हमारे को तो लिक्विडिटी मैनेज नहीं होती है अभी तक। तो इस लिक्विडिटी मैनेजमेंट को, इस लिक्विडिटी क्राइसिस को हमें पहले समझना पड़ेगा, उनकी वेल्थ को समझना पड़ेगा, उसके लिए कुछ टूल्स देने पड़ेंगे दैट विल हेल्प देम सो दैट दे कैन मैनेज देयर लिक्विडिटी इन टू अ राइट वे, सो दैट दे कैन प्लान द ट्रांजिशन वेल. Once they have been given that tool, now we have to approach this four-step approach. But it is very important to understand that our regular monitoring of all of these things are very important. ये भी हमने पीछे किया. Governance establish बहुत important है. Communication gap नहीं होना चाहिए, वो बहुत important है. इन सब चीजों के साथ में अपने बिजनेस और फैमिली के साथ में अलाइनमेंट बनाना और थ्री सर्कल मॉडल जो अभी हमने पहले डिस्कस किया उसको इम्पोर्टेंटली स्टैब्लिश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है दैट वी हैव टू डू विद दैट. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस डॉक्यूमेंटेशन में हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत रोल प्ले कर सकते हैं. देखिए कैसे कि अगर फैमिली वैल्यूज, कोर वैल्यूज को कहीं पे भी डॉक्यूमेंट करना हो तो हम कर सकते हैं. एक फैमिली स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाने में कर सकते हैं, उनका लेगेसी स्टेटमेंट ड्रॉ करने में कर सकते हैं, उनका विजन स्टेटमेंट बनाने में, उनका फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी विल, उनकी कंटिन्यूटी प्लानिंग, उनका एस्टेट प्लानिंग, इन सब जगहों के, इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन हेल्प, वी कैन ड्रॉ, वी कैन गिव देम अ राइट वे थ्रू विच दे कैन डील विद इट. ओपन माइंडेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी शुड बी ओपन माइंडेड व्हाइल टॉकिंग टू अवर फैमिली. So it is better to do a succession planning with these tools. फैमिली बोर्ड बनाना, फैमिली काउंसिल बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मिनट्स मीटिंग के रेगुलर बनाना और रेगुलर मीटिंग करना, एक फैमिली ऑफिस बनाना, एक फैमिली फंड बनाना, ट्रस्ट, विल, गिफ्ट, फैमिली एग्रीमेंट, relinquishment deed, they all become a part of it gradually. Once these all things are into place, the structure can be dealt and structure can be understood without any ambiguity. This is how we have to plan for the succession for our client. तो सक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको गवर्नेंस, ओनरशिप और सक्सेशन प्लानिंग को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा गवर्निंग से, ओनरशिप स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करने से और सक्सेशन प्लानिंग को इन प्लेस ऑफ करने से. टू अनलॉक दिस पोटेंशियल आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगेन इन द मार्केट थ्रू विच वी कैन हेल्प आवर क्लाइंट, वी कैन गाइड देम टू बिकम दैट पार्ट. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5000 करोड़ की एक नया मार्केट है जो आने वाले 10 साल के अंदर क्रिएट होगा फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. कैसे? 2018 के अंदर 45 फैमिली ऑफिसेस थे, 2024 के अंदर 300 फैमिली ऑफिसेस थे और 2030 तक विद इन नेक्स्ट 5 years 1000 फैमिली ऑफिसेस एस्टैब्लिश होने वाले हैं. ग्लोबल सिनेरियो के अंदर और इंडियन सिनेरियो के अंदर इस ग्रोथ को टेजेट्राइज करने के लिए, इस ग्रोथ को मैप करने के लिए एज एन प्रोफेशनल हमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा. देन ओनली वी आर एबल टू रीच टू दिस लेवल. So before we start the next part of my discussion, which is on the law, which is on the text part of it, the succession law and different law, trust and different way through which we can plan for the succession, I'll just give you a quick recap till now that what we have did. We have understood that why the succession is important. We have understood what is succession. We have understood when to plan for it. We have understood how to plan for it. We have clearly understood all of these things, that why it is important for our client to plan for it in a right way. And as in practitioner, इन सब जगहों पे जो भी मैं आपको बात बोल रहा हूँ ये बहुत theoretical नहीं है, ये बहुत practical है, ये doable है, ये achievable है. हमको हमारे client को इन सब जगहों के ऊपर help required है. अगर हम उनको help करेंगे, they'll stay with us. We are able to nourish the better practice avenue for us. We are able to create a new, more emerging area for the practice. Compliance,
और जो भी अब चीजें चल रही हैं ऑडिट में या जिस तरीके से एआई प्रोग्रेस कर रहा है, वी ऑल आर हैविंग अ बिग थ्रेट, वी ऑल नो दैट द कंप्लायंस प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू स्टे विद अस, वी हैव टू कम इनटू एडवाइजरी. AI cannot advise the family because that requires a lot of emotion, that requires a lot of seniority, that requires a lot of understanding, that requires a lot of maturity. This all will be happen with us only. And next 10 years, at least AI is not going to patch it. So my advice to all my fellow and associate chartered accountants that please come and become the part of these kind of advisory services for our client and give some more value addition to them. This will really help them to grow into a right way. So to dive into the taxation part of it, I'll just quickly take you to the Amitabh Bachchan's one line. That अगर एक बाप अपने बच्चे के पहले कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वो बच्चा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? And this statement, these movies has become a victim for the family to make them understand कि succession planning पहले नहीं करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए. But बात का तो और भी गलत तरीका हो जाता है. So I'll quickly dive you into detail that how the law has been, what law says about it, and how we as a chartered accountant should understand it well and advise to our client in the right way. Just a minute. So succession planning is having two possibilities. अगर किसी की भी डेथ होती है, डेथ मीन सक्सेशन. अगर किसी की भी डेथ होती है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो विदाउट मेकिंग अ विल हो गई हो या फिर विद मेकिंग अ विल हुई हो. विदाउट मेकिंग अ विल है तो हम उसको इंटेस्टेट कहते हैं, अगर विद मेकिंग अ विल है तो उसको हम टेस्टेमेटरी सक्सेशन कहते हैं. अगर विदाउट विल हो गई है, अगर इंटेस्टेट सक्सेशन हो गया है, देन अगर वो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो उसके ऊपर लगेगा हिंदू सक्सेशन लॉ. अगर वो मुस्लिम हैं तो उन पे लगेगा शरीयत लॉ. द पर्सन हु हैज डाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु हैज डाइड. If that person has died without making a will, and if he's a Hindu, then he has to follow a Hindu succession law. If he's a Muslim, then they have to follow a Shariat law. Those people who don't fall into a Hindu, Jain, Sikh category or Muslim category, all of them will fall into a third category, which is Indian succession law category, which Christian, Parsi, Zuhis, all will become a part of this way. So this is how the interstate succession happened. But with a will, there is only one law, Indian succession law, and for Muslim, the Shariat law will be continued. So for the Muslim, be it with making a will or without making a will, the Shariat law will apply. But other than Muslims, if without making a will it is a category, then it is a Hindu, Hindu, Jain, Sikh, then it is a Hindu succession law. If it is Christian, Parsi, Zuhi, and other than a Muslim or Hindu, then they'll follow the Indian succession law. This is the first understanding that we should all be very much clear upon. So, this Indian succession law has given an equitable right. So, before we begin this, I'll quickly take you more detail about the Indian succession law in a specifically to a Hindu succession law. So, for example, इंटी जब भी किसी की डेथ होती है, तो इंटी मतलब क्या हुआ कि जिसने विल नहीं बनाई है. विल बनाई है तो अलग कैटेगरी है, विल नहीं बनाई है तो अलग कैटेगरी. विल बनाई हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, टेस्टेमेटर के ऊपर. पहले अभी हम इंटरस्टेट सक्सेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. इफ वन हैज डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, तो सबसे पहले हम उसका डोमिसाइल चेक करेंगे. इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया के अंदर है, गवर्निंग लॉ इंडिया लगेगा. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो भी इंडियन सक्सेशन लॉ लगेगा. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया है, उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन लॉ नहीं लगेगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट डोमिसाइल शुड बी वेरी मच क्लियर. अब अगर इंटी स्टेट सक्सेशन के अंदर हिंदू डाइज, a Hindu male dies without making a will, in that case the succession will follow this hierarchy: class 1 legal here, then class 2 legal here, then agnants and cognants. The distribution will go into this way. All will not get the share. Who will get? Class 1 legal here. If there is no class 1 legal here, then it will go to the class 2 legal here. If there is no class 2 legal here, then it goes to the agnants. If there is no agnants, then it goes to the cognants. This is the hierarchy that we have to follow if intestate succession Hindu male dies. So what is class 1 legal heir and class 2 legal heir? So let us first understand that class 1 legal heir means a person who has a male who has died. उसके कौन-कौन लाएंगे class 1 legal heir के अंदर? उसकी मदर, उसकी विडो, उसके सन, उसके डॉटर
or specified grandchildren or children of a predeceased son of a son or a daughter. To keep it simple, अगर मेल डाई करता है तो उनकी वाइफ, उनकी मदर, फादर इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 1. उनकी विडो, उनकी मदर, सन और डॉटर, और सन और डॉटर अगर नहीं है तो उनके प्री डिसीज्ड अगर वो पहले हो गए हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो दिल बिकम अ पार्ट. दिस इज द फर्स्ट क्लास 1 लीगल हेयर. क्लास 2 लीगल हेयर के अंदर बीइंग फादर इज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ क्लास 1 लीगल हेयर. क्लास 2 लीगल हेयर में कौन आया? फादर, सिबलिंग, nephews, grandparents, uncle, aunties, and cousins. To be keep it very simple and precise. Agnates and cognates, any relative that find on the male side, that is agnate. अगर क्लास 1 नहीं मिले, क्लास 2 नहीं मिले तो हम एग्नेट्स में जाएंगे. एग्नेट इज एनी पर्सन हु क्लेम दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. उनके कजन, उनके फादर, उनके किसी भी रिलेशन के अंदर जो भी उस मेल हायरार्की के अंदर जो भी अवेलेबल होगा उसको एग्नेट्स बोलेंगे. अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो कॉग्नेट्स में जाएंगे कि फीमेल साइड में जाके देखेंगे कि वहां पे कोई अवेलेबल है क्या. फीमेल कजन थ्रू अ मदर, इन सब के बाद में जाके देखेंगे कि उनके पास में कोई कजन कैटेगरी है क्या जहां पे जाके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट बिकम्स कॉग्नेट्स. तो क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, दिस इज द हायरार्की ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट. चलिए एक क्विकली क्वेश्चन कर लेते हैं. एक कपूर की हवेली है. तो मिस्टर राज कपूर, अ बिजनेस ओनर, पास्ड अवे विदाउट मेकिंग अ विल. तो इट्स द इंटरस्टेट सक्सेशन. ठीक है. हिज वाइफ, सन, daughter, mother are trying to divide the Kapoor family. However, Raj brother claims that the daughter has no right in the ancestral property because she is married and traditionally daughters are excluded. What do you think what will happen? So we have to check, because he has died without making a will, the Hindu succession law will apply. So we have to check that who all will become a part of it. His wife, widow, son, daughter, and mother. Are they all are the part of class 1 legal heir? Answer is yes. So they'll all will get the equal share. It is not like that the daughter will not get any amount, because daughter is having a equal right. Son and daughter is having a equal right into a father's. Example 2. Amar Singh dies, leave behind a vast property. His elder son, Vijay, claims that only son can inherit the property, excluded his sister Anjali and son from Amar's second marriage, Mohan. What will happen? तो पहली बात तो सन को एक्सक्लूजन के अंदर क्लास 1 लीगल हेयर के अंदर वी हैव टू सी दैट दे ऑल विल बिकम पार्ट. तो विजय विल बिकम अ पार्ट, डॉटर विल बिकम अ पार्ट. तो कौन कौन है? हिज एल्डर सन विजय, विजय विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, वन. इनहेरिटेड सिस्टर विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट. उनकी जो ये दे ऑल विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट irrespective of that whether it is coming from the second marriage or not, because that has been recognized by the law. So now second question arises that this is a place where we have talked about the interstate succession of a Hindu male. So let us talk about the interstate succession of a female. मेल और फीमेल में इन्होंने बायसनेस क्रिएट करी. तो पहली बात तो इन्होंने बोला कि फीमेल के पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, पार्टीशन प्रॉपर्टी हो सकती है, इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस प्रॉपर्टी आ सकती है, बाय गिफ्ट आ सकती है, बाय ओन स्किल आ सकती है, बाय परचेज आ सकती है. किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी जो भी एक फीमेल ने एक्वायर करी तो उसका ये चेक करना पड़ेगा कि शी इज अ हिंदू फीमेल एंड डाइज इंटरस्टेट, तो उसका सक्सेशन किस तरीके से होगा. तो उसके लिए उसके अंदर क्या बोला कि पहला बिफोर वी डाइव इनटू वो किस तरीके से होना चाहिए, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग. सेक्शन 14(1) that says that any properties in possession of her is absolute clear property होनी चाहिए. However, उसके अंदर कोई भी एक्सक्लूजन या कोई भी और तरीके से वो गिफ्ट नहीं हो सकती, या किसी भी तरीके से अगर उसमें एक्सक्लूजन दे रखा है देन इट इज नॉट अ हर प्रॉपर्टी. सिंधु सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहिब का एक केस है. सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐसा कहा कि जब उनको प्रॉपर्टी मिली थी अपने फादर से तो उन्होंने गिफ्ट की थी, और गिफ्ट और विल के थ्रू प्रॉपर्टी आई थी, बट एक रेस्ट्रिक्टेड राइट के साथ में आई थी कि जब तक वो अलाइव है तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी वापस बैक हो जाएगी टू देयर सिबलिंग्स और टू द अनदर फैमिली मेंबर. बट सिंधु जी ने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को गुरुद्वारा साहिब को दान कर दिया.
सेइंग कि तो मेरी प्रॉपर्टी, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, नाउ आई कैन ट्रांसफर इट। अगर कहीं पे ट्रांसफर एक कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, अगर प्रॉपर्टी के अंदर रेस्ट्रिक्टेड राइट ट्रांसफर्ड है, चाहे मेल के या फीमेल के, उन दोनों ही केस के अंदर उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बिकॉज राइट टू यूज इज देयर बट राइट टू ट्रांसफर इज नॉट देयर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑफ सिंधुजा सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहिब. So now it brings a clarity कि female will can claim the amount or she can earn the money by these methods and can inherit the same to the next generation. If female dies intestate, then how the hierarchy will be? First, son, daughter, and husband. Son, daughter, and husband. This is the first level. If they all are not there, then it will go to the heirs of the husband. If heirs of husbands are not here, then it go to the parents, to her parent. For example, if my mother dies without making a will, if son, daughter, and husband is not there, then that property will go to the hierarchy to my father, as if my father has died without making a will. So, पहला son, daughter, husband. Second, heirs of the husband. Third, parents of that daughter, of that lady. Fourth, heirs of father, and then heirs of mother. This is the order through which it will proceed. तो अगर सन डॉटर हस्बैंड है तो वहीं पे खत्म हो गई. अगर एक भी अलाइव होगा, कोई भी अलाइव होगा, उनके पास में या तो इक्वल बढ़ जाएगी जो भी लोग बचेंगे, अगर नहीं है तो जो भी होंगे उनके पास में, अगर एक ही है तो एक के पास में चल जाएगी, अगर नहीं है तो हेयर्स ऑफ हस्बैंड के पास में जाएगी. हेयर ऑफ हस्बैंड कैसे डिसाइड होगा? वो इस कैटेगरी से डिसाइड होगा, एज इफ हिंदू मेल हैज डाइड. क्लास 1, क्लास 2, एग्नेंट्स एंड कॉग्नेंट. दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच इट विल मूव. तो अगर उनके हस्बैंड, सन और डॉटर नहीं है तो इट विल बिकम अ क्रिटिकल केस फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन. If the property, there is one more exception to it. If a property, section 15(2) says, if a property inherited from her father and she dies without any children, the property revert back to the father and father's heir. However, if she has received any gift from the father, then normal succession pattern will apply. अगर कोई भी इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टी आई है और फीमेल की नेक्स्ट जनरेशन अलाइव नहीं है, अगर उनके बच्चे नहीं है, तो देन इट वोंट पास टू देम, इट विल गो बैक टू द हेयर्स ऑफ द फादर. अगर लेकिन फादर ने गिफ्ट कर दिया है, विल कर दिया है, देन दे कैन एंजॉय दैट प्रॉपर्टी एंड शी कैन पास ऑन एज इफ शी इज हैविंग हर ओन प्रॉपर्टी. दैट इज व्हाट द एक्सेप्शन इनटू इट इज. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा राइट है, राइट ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ वूम. अगर कोई बच्चा अगर गर्भ में भी किसी की मदर के है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर भी उस बच्चे के भी पूरे राइट होंगे इनहेरिटेंस के अंदर. दैट इज व्हाट द लॉ सेज. अगर इन स्टेप सन्स है, स्टेप सन के अंदर केस में क्या होगा? सन ऑफ द प्रीवियस marriage cannot be inherit as a legal heir under the Hindu succession law, but if he or she left a will, then the property can be transferred to the son. सन या डॉटर को ट्रांसफर करने के लिए हिंदू सक्सेशन लॉ के अंदर और जजमेंट्स के अंदर ये बहुत क्लियरली बता दिया दैट दे कैन नॉट इनहेरिट द राइट. स्टेपसन राइट नहीं रखता. स्टेपसन और इलेजिटिमेट चाइल्ड के बीच में डिफरेंस है. स्टेपसन हुआ जब उनकी शादी हो रही थी, तो उनकी वाइफ के साथ में ऑलरेडी कोई बच्चे थे, उनके साथ में कोई बच्चे आते हैं, तो दे डोंट हैव द राइट विद दैट प्रॉपर्टी. द स्टेपसन और स्टेप डॉटर डोंट हैव द राइट टू द प्रॉपर्टी, बट देयर हिज ओन सन, his own daughter, even after the second marriage, creates a right into a property. ठीक है? There are few more exceptions which has been talked under this act. Section 25 says that disqualification due to murder. अगर किसी ने भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर उन्होंने उसका मर्डर किया हो तो. दैट मीन्स कि मैंने अपनी फादर की प्रॉपर्टी लेने के लिए मैंने उनको मार दिया और ये क्लेम प्रूव हो गया, देन आई कैन नॉट क्लेम अ राइट टू दैट प्रॉपर्टी. अगर मैंने कन्वर्जन किया किसी दूसरे रिलीजन के अंदर, तो अगर हिंदू हैज बीन कन्वर्टेड is not disqualified, a Hindu converted is not been disqualified from the inherited property, but अगर उन्होंने बाय बॉन्ड उसके साथ में कन्वर्जन कर लिया था तो वो नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसको साथ में वो राइट रहेगा. रीमैरिज ऑफ विडो
रीमैरिज ऑफ विडो के केस में अ सन, ग्रैंडसन और अ ग्रेट ग्रैंडसन इज डिस्क्वालिफाइड इफ शी हैज रीमैरिड। अगर उसने रीमैरिज कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उन सब चीजों से, पुरानी प्रॉपर्टी से, उन सब चीजों के बीच में, इनहेरिटेंस के बीच में वो कहीं पे भी नहीं आते। प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू, इफ अ फीमेल हिंदू डाइज इन स्टेट हर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले केस के अंदर कि वो इनहेरिटेंस में किस तरीके से जाएगी। तो एक एक्सेप्शन हो गया मर्डर, एक एक्सेप्शन हो गया जहाँ चेंज ऑफ रिलीजन हुआ, एक एक्सेप्शन हो गया जहाँ पे रीमैरिज कर ली किसी ने। अगर इन तीनों ही केस के अंदर उनका चेक करना होगा दैट दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड विद दिस। तो नाउ विद द सेम पॉइंट द हिंदू सक्सेशन लॉ also talks about the Hindu, I'll say unlimited family, it is Hindu undivided family, but for me it is an Hindu unlimited family। क्योंकि सक्सेशन के अंदर जब डिवीजन और पार्टीशन की बात आती है तो दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ रिफ्ट बिटवीन द पीपल इन अंडरस्टैंडिंग आल्सो। आई हैव सीन द लॉट ऑफ केसेस वेयर पीपल सी कि हमने तो एचयूएफ की भी विल कर दी है। एचयूएफ की विल नहीं हो सकती। एचयूएफ कैन ओनली पार्टीशन कैन बी डन इनटू अ एचयूएफ प्रॉपर्टी। HUF is separate, a person, individual is a separate. Ravi Mamudia is a separate person, Ravi Mamudia HUF is a separate. Ravi Mamudia HUF can be partitioned, but Ravi Mamudia can give his will, can write his will. I cannot write a will for my HUF. So that is something which creates a lot of dispute among the people that मेरी और मेरी HUF तो एक ही है। नहीं भाई, there are two different entities and we have to understand because that has been kept by different ways by the law itself। ठीक है, तो मैंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन स्टॉप एडवाइजिंग द पीपल दैट डोंट क्रिएट अ एचयूएफ बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैसल फॉर द पार्टीशन फॉर द अदर थिंग्स वंस यू हैव सेटल्ड इट अप। केवल 3-4 लाख रुपए का जो हमको उसका एक बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल रहा है, इसके अलावा देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन विद इट। अगर स्पेशली आफ्टर द 2005 there's a co-partners agreement के अंदर जब ये क्लैरिटी आई, जब अमेंडमेंट आया कि डॉटर इज ऑलवेज बीन गिवन इक्वल राइट टू इट, तो डॉटर की फैमिली तक आपकी एचयूएफ का पार्ट बन गई है। तो मेरी फादर की अगर एचयूएफ है तो मेरी फादर की एचयूएफ में मैं भी हूँ, मेरी सिस्टर भी है, मेरा ब्रदर भी है, हम लोगों के बच्चे भी। अगर सिस्टर अलाइव है तो उनके बच्चे भी इसका पार्ट है, अगर वो अलाइव नहीं है तो भी उनके बच्चे भी इसका पार्ट है। अगर उनके भी बच्चे हो जाते हैं और हमारे भी कोई और बच्चे हो जाते हैं तो वो भी उसका पार्ट बनते हैं। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद इन द फैमिली। So I advise to a people that let us not bring a lot of structuring through HUF. It is better to keep it side and do the structuring for the individual itself. Ancestral property को लेके भी there's a lot of confusion, there's a lot of talk that happens. People, what is the ancestral property? कोई भी प्रॉपर्टी तो 3 जनरेशन से ज्यादा कंटिन्यूइंग आगे आती है तो फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर इन 3 लेवल के ऊपर अगर कोई भी पास ऑन करते हुए प्रॉपर्टी आती है तो उनको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एचयूएफ प्रॉपर्टी होती है? माय आंसर इज नो। एचयूएफ प्रॉपर्टी वो हुई जो एचयूएफ को गिफ्ट से मिली, क्रिएशन के अंदर मिली, या एचयूएफ ने कैसे भी अर्न करी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एचयूएफ से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है तो मुझे इंडिविजुअल पे मिल रही है, इट इज नॉट इनटू माय एचयूएफ और नॉट इनटू माय फादर्स एचयूएफ, पहला। दूसरा, जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आती है तो उसका सक्सेशन इनहेरिटेंस से चल रहा है, मगर मेरे फादर के पास में इनहेरिटेंस से आई, आने के बाद उन्होंने फैमिली पार्टीशन कर लिया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज हिज ओन प्रॉपर्टी एंड देन दैट प्रॉपर्टी कैन बी विल्ड, गिफ्ट, सोल्ड, कुछ भी किया जा सकता है उसके बाद में, उसके ऊपर उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। There's a lot of confusion about the inheritance law, and I believe that that creates a myth among the people that a lot of challenge has been done by different courts in our country regarding this law, and I believe there's a huge clarity. It is all that people wanted to create a mess around it. So by this I end up making you understand that if somebody dies without making a will, so let us go into an understanding that what is testamentary succession. Testamentary succession means a succession where we have to make a will. The will is in a place that is called as testamentary succession. Am I clear? तो जब भी कोई पर्सन ने अपनी विल लिख दी, विल मतलब हो गया इच्छा, मेरी क्या इच्छा है, if that has been expressed by any way, then we call it a will, and then we call it a testamentary succession. Then whatever has been written by that person, the succession will happen into that way. The succession will follow that way. For example, what is will? Will is my wish, will is my desire, will is my instruction
which should be followed post me to distribute my property after me. That is what the will is. तो स्पेसिफिक क्या है, मोड एंड मैनर क्या होना चाहिए डिवीजन का, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. ऑपरेट केवल उसकी डेथ के बाद में हो सकती है, पर्सन की डेथ के बाद में. दैट मीन्स इट स्पीक्स फ्रॉम द ग्रेव. रिवोक और अमेंड कितनी बार भी किया जा सकता है. दीज आर द बेसिक थिंग दैट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, अबाउट द विल. तो नाउ व्हाई टू मेक अ विल? To ensure the complete control, minimizing the risk of succession dispute, providing opportunity to acknowledge and reward the people that who have been worked with you, who have been a part of your journey, and give the right kind of person to a right thing. It advises to create a will at the early age and allows an unlimited revision. Because of that unlimited revision, we can make it any point of time in our life. So these are the important ways that why one should plan for the succession, why one should plan for the will. So who can make a will? Now the next question arises that any individual who is major above 18 can make a will. Only one condition, that he must be above 18. Second condition is that he should be of the sound mind. Then he can make a will. A man or woman, all can make a will. बहुत बड़ा मिथ है क्या वीमेन भी विल बना सकती हैं? आंसर इज यस. जो भी वीमेन के साथ में अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को लेके अपनी विल बना सकती है. पर्सन हु आर अर्ली एज पे बना सकते हैं, एल्डर इंडिविजुअल बना सकते हैं, इलिटरेट पीपल बना सकते हैं, मैरिड वीमेन बना सकती है. एनी पर्सन कैन मेक अ विल. हु कैन नॉट मेक? एनी पर्सन हु इज हैविंग अ अनसाउंड माइंड और untuned cannot make a will. Otherwise any person can make a will. How to make a will? What are the basic thing about the make will? That it should be titled as the last will and my testament. It should clearly identify the name, address, and sound-mindedness declaration. It should appoint an executor for the will. It gives a clear list of the assets and the beneficiary. Appoint any guardian in case of a minor, and it should be signed and dated well in the presence of two witnesses. These are the basic essential things that required while making a will. Can be written or can be typed. It can be signed. It must be signed by the testator. It must be signed by the witness, and the properly dated is the most important thing. Because last will जो होती है वो prevail होती है. अधिकतर जो कोर्ट के अंदर कैसे चलते हैं कि ये लास्ट विल नहीं थी, इसके बाद तो इन्होंने ये विल और बनाई थी. That is something which is very much important to understand. There are some exception कि oral will भी हो सकती है क्या? No. Oral will केवल दो ही केसेस के अंदर हो सकती है. Muslims can do the oral will, and a soldier who is at the war field going for a war, before going for a war, if he wanted to declare his will, then they can also do a oral will. Otherwise there is no way through which a oral will can be done. The law doesn't say that it should be properly stamped, registered in a specific format, nothing. But I always recommend to all of my clients that your will should be registered well in time. This is the most important thing, because registration of will stop the litigation among the people. Once it gets registered, then it will give a lot of clarity to the family members. Who can be the witness? Anybody can become the witness. At least two people should be there. They should properly affect their signature on the paper on which the will has been written. It is properly acknowledged, and witness are not required to be known कि उसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि आपको अपने विटनेस को सब कुछ बताना है. आप विटनेस केवल इतना सा विटनेस कर रहा है दैट ही इज साइनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. द वन हु इज मेकिंग अ विल इज साइनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. दैट इज द ओनली प्रूफ दैट द विटनेस शुड नो. किसने किसको प्रॉपर्टी क्या दी इज नॉट एट ऑल द रिक्वायरमेंट दैट अ विटनेस शुड नो अबाउट इट. कैन अ विटनेस बी बेनिफिशियरी? नो. विटनेस कभी भी बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए. अ विटनेस कैन बी एन एग्जीक्यूटर. यस. एग्जीक्यूटर कौन हुआ कि मेरी डेथ के बाद में ये तो विटनेस थे, बट मेरा एग्जीक्यूटर इसके पास में मैं रख रहा हूँ, ये जाके एग्जीक्यूट कराएगा इस विल को. लॉट ऑफ टाइम इट इज देयर अ चार्टर्ड अकाउंट, देयर इज अ लॉयर हु गॉट एन एग्जीक्यूटर ऑफ दैट विल. डॉक्टर्स दे आल्सो become an executor of the will. So my humble request that we should not make the beneficiary as a witness of any will. Who can be the beneficiary? Anybody, any family member can become the beneficiary. Any friend, relative can become the beneficiary. Employees, house help, anybody, any professional, lawyer, chartered accountant, even we can become a beneficiary for our client. Any stranger can become the beneficiary. Any charitable organization can become the beneficiary. So there's a lot of people who have been a myth कि beneficiary केवल घर के लोग ही हो सकते हैं, उनके घर के मेंबर, उनके बच्चे, स्पाउस, चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. The answer is no.
The beneficiary can be anybody. Whoever so they want, they can transfer the property to that beneficiary. Even the cats and dogs has become a beneficiary at some of the will. There's a lot of people who have been a cat lover. They have given their asset. The Mumbai couple has given a 5 crore rupees asset to their dog by creating a trust for that dog, and that trust is taking care of that uh, dog. So this is, and that has been done by us. So we know that this kind of structure also works very well. So how can we execute? Who can be the executor? Someone who is very trusted to you, who is willing to get this capacity, who has a competent mindset, preferably a younger than you. ऐसा नहीं हो कि आपने अपने सीनियर को बना दिया, he has passed away before you. The executor should be younger than you. So what are the duties of the executor? To arrange a funeral, to settle all the debts, apply for the probate, maintain the proper accounts, and distribute the asset among the beneficiary. These are the duties an executor has to do. An executor can also charge an amount against it, that he can also charge a certain amount against his services as an executor. What should be done in case of owning an asset in multiple countries? अगर मैंने multiple countries में asset बना ली तो मैं will कैसे करूंगा? मेरे पास दुबई में भी assets हैं और मेरे पास इंडिया में भी assets हैं. So I have to do two different will, because we have to make a will for Dubai separate, we have to make a will for India separate, and both the will should mention each other's thing. So for example, in the Dubai will, I'll make a reference that I made an Indian will on this date, which constitute of my Indian assets. In the same way, in the Indian property, Indian will, I'll mention that on this day or in this time, I have made this will in the Dubai for the Dubai property, and that should be disposed according to that. Just a cross reference about that same asset. This will be required because that will create a lack of confusion among the beneficiaries. So there's a lot of people who understand that हमने तो nominee appoint कर दिया and we have a joint holding, so there is no requirement of making a will because the nominee is there and the joint holding is also there. My answer is that nominee is not the owner. It has been clearly depicted by all the laws that nominee is just a time gap arrangement. He acts as a custodian. He is not the owner. He acts as a custodian, and whatever the way it has to be distributed. Say if one has made the will, then it will be distributed as per the will. The nominee can receive and then further have to distribute as per the will. If there is no will, then we have to say that which law will apply: Hindu succession law, Indian succession law, or Shariat law. According to that, he has to distribute or she has to distribute that amount among all the beneficiary. So nominee is nothing but a time gap arrangement. There's a lot of people who is having a confusion regarding the same, that we have a nominee, we have a joint holding, we are not required to do anything about the will. But will is something separate and the nomination and the joint holding is something separate. That doesn't involve each other's things. अब जहां तक हमने सब कुछ पढ़ा कि हिंदू लॉ ये कहता है इसको इस तरीके से करना चाहिए, अगर विदाउट मेकिंग अ विल हुआ तो ऐसा होगा, विल बनाएंगे तो ऐसा होगा, विल में क्या क्या राइट्स होते हैं. विल में मैं आपको एक बहुत क्लियरली एक और चीज बताता हूँ, दैट इट शुड बी रजिस्टर्ड. बिकॉज अगर आपकी विल रजिस्टर्ड नहीं होगी, अगर आपकी विल रजिस्टर्ड नहीं है और आपने नॉर्मल पेपर पे विल बना लिया है और आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाके बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे को ट्रांसफर कर दो क्योंकि इसमें विल में लिखा हुआ है, और बिल के ऊपर प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है, वो नोटराइज नहीं है, या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्टर्ड वैल्यू मतलब रजिस्ट्रार के पास में, देन इट विल वोंट बी गिव दैट वैल्यू, दैट डिपार्टमेंट वोंट गिव द वैल्यू. आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलोगे देखो हमारे पास में विल है, इसको पैसे को हमें दे दो, दे वोंट गिव यू द मनी बिकॉज आपके पास में रजिस्टर्ड विल नहीं है. दैट शुड बी द प्राइमरी केस, इट शुड बी रजिस्टर्ड. अगर आपके पास में रजिस्टर्ड विल है, देन ओनली यू कैन बी इन अ प्रॉपर एंड राइट फुट टू क्लेम योर अमाउंट. तो क्या अनरजिस्टर्ड विल ही चैलेंज हो सकती है, रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज हो सकती है? माय आंसर इज दैट बोथ कैन बी चैलेंज्ड. इट इज नॉट एट ऑल दैट ओनली अ रजिस्टर्ड विल कैन बी चैलेंज्ड. इवन अ अनरजिस्टर्ड विल और अ रजिस्टर्ड विल बोथ कैन बी challenged. So the biggest challenge about the succession is that it can be challenged. The biggest flaw about the will is that it can be challenged at any point of time. So I'll give you a very recent case, Sanjeev Kapoor's case. तो what happened into this case अभी recently चल ही रहा है. इसके अंदर समीरा और प्रिया कपूर, they have been fighting about the property.
द केस इज जिसके अंदर ये क्लियरली आ गया कि भाई जो सेकंड वाइफ है वो भी अपना क्लेमेंट लेके आ गई है और उनके जो बच्चे हैं वो भी अपना क्लेमेंट लेके आ गए हैं कि नहीं हम भी क्लेम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को. वंस देयर इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ इज देयर, द विल ऑलवेज क्रिएट्स अ डिस्प्यूट अमंग द बेनिफिशियरी बिकॉज that defines into some way, but that can be challenged at any point of time. Once that has been challenged, be it registered or unregistered, till the time it will settle, there's a lot of rift between the family members. There's a lot of confusion. There's a lot of unutilization of fund. The property becomes seized. They'll be lined with the government, and there's a lot of such kind of stuff that happens. So I always advise that it is better to make a will, but for those people who are having a good net worth, who are having a reasonable set of net worth, we don't advise them for. We say that create a structure by creating a trust proper. Create a beneficiary and then trust and execute that in front of you. Because the only difference between the will and trust is that will speaks from the grave. When you will know more, then your will come into the front and then it will be read loud and that will be distributed accordingly. And there is a dispute probability. There's a lot of dispute probability. But in case of trust, it has been registered before you when you are alive. It should be executed before you when you are alive, and you can distribute and you can see that whether the distribution has been done in the right way or not. Is there any challenge that can be modified by you because you are alive till now? That is the right structure for a reasonable wealth. Whenever you are having a reasonable and sizable wealth, it has always been advised to go for a trust kind of a structure, not only for the will. So that succession, what my takeaway about this Sanjeev Kapoor is maintain and update a regular will and estate plan is important. Ensure that the clear communication and documentation is very important. Transparency among the family member is very important, and creation of a structure which can last and which is required by the family should be there. It is not like कि हमने will बना लिया and that sorts the purpose. So as I've already told you, the difference between the trust and will is that will is active after death, but a trust can be alive while your life is. Minor cannot be directly get the inheritance, but in the trust minor can get. बेसिक एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है विल बना लिया आपने बेसिक, बट अगर आपको कोई डिटेल यूजेस और कंट्रोल भी एस्टैब्लिश करना है उसके लिए ट्रस्ट एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है. Probate has become a challenge for the will, but probate is not required for the trust. So these are the important things that we have to understand while advising to our client that what should be the structure that he should take, what should be the right structure for them, and accordingly they should take it. So what is a trust? A family trust is a type of a private trust that creates to hold and manage the asset for the benefit of the family members, often across generation. Purpose क्या है? मतलब फैमिली वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना स्ट्रक्चर्ड सक्सेशन प्लानिंग को, प्रोवाइड अ प्रॉपर डिपेंडेंसी अगर जो भी लोगों की है, चाहे वो माइनर हैं, चाहे वो एल्डर हैं, चाहे स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है. और एक फैमिली डिस्प्यूट को और इनहेरिटेंस के चैलेंजेस को अवॉइड करता है. अगर कल इंडिया में अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है तो विल से अगर कोई भी चीज ट्रांसफर होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर ट्रस्ट के थ्रू अगर आपने अपने आप को स्ट्रक्चर किया है तो उसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. दैट इज व्हाट द इनहेरिटेंस लॉस इज. All of the developed countries having an inheritance tax, and I feel personally as a practitioner into this area that after some time there is an inheritance tax into India also, and we all will be facing it. So उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि right kind of wealth के अंदर it has always been advised to a client that they should go for the trust structure for that. So what are the type of trust? Discretionary trust, revocable family trust, irrevocable family trust, and testamentary family trust. Who are the key parties into a trust? Settler, the one who settles up, the one who wanted to create this trust, जिसके पास एक reasonable sizable wealth है, उसको हम trust settler कह रहे हैं. Trustee is a person or a body corporate who have been appointed to manage, admin, distribute the assets and as per the instruction of the settler. Beneficiaries are the individual or the family member who is ultimately going to receive the benefit of this income. Trust deed is a document which has been created and get registered so that the structured can be registered and the proper return and a proper compliance should be done for the trust deed, that so that the trust deed is a tool through which it has been made. And trust properties are those property which has become a part. The settler has settled these property into a trust to distribute, which has been managed by the trustee and for the benefit of the beneficiary. That is what the trust structure is.
यस। अब ट्रस्ट के अंदर विल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप ट्रस्ट को किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर करने का एक मैकेनिज्म बना सकते हो, कंट्रोल लगा सकते हो, रेगुलेटरी कंट्रोल लगा सकते हो कि दैट यू वोंट सेल दिस, the trust cannot sell this, trust cannot enter into these kind of things. There's a lot of family values into a any family. That family values can also be protected by creation of a trust. तो बेनिफिशरीज ऑफ द फैमिली ट्रस्ट कौन कौन, कैसे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फैमिली ट्रस्ट को बनाने के? एक वेल्थ प्रिवेंशन होता है, सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपरली हो जाती है, टैक्स इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं हम लोग ट्रस्ट के थ्रू स्ट्रक्चर करके, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज किया जा सकती है, और एक एसेट प्रोटेक्शन के लिए। दीज आर बिकम अ बेनिफिट्स फॉर विच द ट्रस्ट हैज बीन प्लान्ड बाय द पीपल। What are the steps for creation of a trust? Define the objective. Why we wanted to create a trust? To protect, to transfer, to prevent, to create a wealth. What are the reasons for it? Define the objective is the most important thing because that is the base of any trust. We always say it's a wish letter from the settler. The settler creates a wish letter that I wanted to do this. On that wish letter, we create an objective out of it and then create a trust deed out of it. Drafting of a trust deed, second step, then appointment of a trustee. The trust deed creates a clarity about the role, responsibility, and the terms which has been mentioned into the trust deed. That trust deed once has been finalized, then the trustee who will going to manage these things, get it registered and transfer the asset into it. Then we can make a flow that how the income will be following to the next generation or to the beneficiary. So the title, what are the structure and headlines for the private trust? What all will be included? टाइटल होना चाहिए, डेट होना चाहिए, पार्टीज मतलब सेटलर, बेनिफिशियरी, ट्रस्टीज की क्लियर डिटेल होनी चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका नेम ऑफ द ट्रस्ट क्या रखा है उनको वो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ड्यूटीज एंड पावर डिफाइन होनी चाहिए, मोड ऑफ ऑब्जेक्शन, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, एडिशन और रिमूवल किस तरीके से होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, ऑडिटिंग कैसे होगी, गवर्नेंस कैसे आएगी, रिवोकेशन कैसे करेंगे, डिस्प्यूट हो गया उसको रिजोल्व कैसे करेंगे, signature or witness होना चाहिए. These all are become important steps while making and drafting a will. Taxation of a private trust, बहुत लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने प्राइवेट ट्रस्ट में कुछ डाला तो उसके ऊपर टैक्सेशन आ जाएगा. The taxation, there is no taxation once the trust is transferring that property. Sorry, the individual when transfer the property to the trust, there is no tax, there is no capital gain into it. So, as per section 47(1), there is no capital gain on transfer of an asset by a settler to a trust. Whatever trust earn out of it, the trust has to pay a tax onto it. Once the trust has paid the tax onto it, the distribution of the same to the beneficiary won't be tied into the distributee's hand. These are the basic understanding that we should understand about the trust. So, again, I feel that after all of this, it's become very clear that sometimes we have to give an advice to a client to create a will. Sometimes we have to advise them to create a gift. Sometimes we have to advise them to create a trust. Or in many of the time, we advise to give all three or two of them to create a proper structure for them. अगर कोई भी चीज को इमीडिएट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है गिफ्ट कर देते हैं ऑफ मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें यूजुअल रिस्क क्या है कि हमारा कंट्रोल उसमें से छूट जाता है. अगर विल कब कर सकते हैं? जब सक्सेशन आफ्टर डेथ करना हो. उसके अंदर एसेट किस तरीके से ट्रांसफर होंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर ट्रस्ट स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है बिजनेस एसेट के ऊपर, डिपेंडेंस के ऊपर, और एक स्पेशल नीड को और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं ट्रस्ट के थ्रू. दैट इज व्हाट एंड हाउ इट शुड बी एडवाइज्ड by us to our clients. There are certain judgments which I'll quickly take to you. Inheritance right of a children born from a live-in relationship. तो गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली डिटेक्टेड कि अगर किसी भी लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू भी अगर कोई बच्चा आया है, दैट बच्चा हैज हैविंग अ इक्वल राइट एज ऑफ अ normal legitimate child. That children should be treated as a legitimate child. That is what the important thing is to understand here. So even if live-in relationship has been established, the live-in relationship and that gives a birth to a children, then children is having all the rights into that property. Revocation of a gift deed. अगर मैंने अपनी गिफ्ट कर दी किसी चीज को तो मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता. तो अगर मैंने एक बार कोई गिफ्ट अपने वाइफ को कर दिया, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं मुझे वापस रिवोक कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल.
Once given a gift, it will be treated as a gift, then it becomes that person property. Then they have to define that property as per that person's use. What if there is by inheritance tax applicable into India that I've already discussed with you? So these are some myths around the succession that only rich people can plan for the succession. My answer is no, even a chai ki thadi wala can also plan for the succession. Succession planning means retirement. No, succession planning means that you have a proper controlled way through which you can retire your life. Well, retirement is the last stage of the succession planning. Giving up the ownership means giving up the control. No, if the succession planning has been done in the right way, there's a systematic way through which we can lose the control. There is no effective or a business profit. If there is no effect on any business profit, I don't think that Boston Consulting Group study has clearly mentioned us कि if we have a prepared transaction, a planned transaction, then definitely it is going to increase the goodwill, that will increase the market capitalization, and that will increase my profit as well. So there is a direct impact of a succession planning to my business as well. So these are the important things which I wanted to make you understand. So now before we take it forward, we have to understand that the succession is having a two domain, proactive approach and reactive approach. What is a reactive approach? Reactive approach comes post facto. जब कुछ लड़ाई हो गई, कुछ भी चीजें हो गई, तो वो पोस्ट फैक्टो जो भी चीज होगी वो रिएक्टिव अप्रोच है. For the reactive approach, there's a lot of advisor or lawyers who have been standing and they advise that how after a reaction it can be controlled. But what is proactive approach? Proactive approach is an approach which has been taken before. As a consultant, we should advise to our client that we wanted to be in a proactive approach. We wanted to help you before it becomes very reactive, before it becomes very chaotic into a family. तो बेनिफिशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश करना. अगर फैमिली के अंदर एक गुड गवर्नेंस तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब एक गुड गवर्नेंस, एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोफेशनलाइज तरीके से चलाने का एक मैकेनिज्म बनाया जा सके. जब भी एक अच्छा तरीका बनेगा एक गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश करने का, दैट विल अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली एंड देयर गोल, that will give a clear role and responsibility of the family member, that will help to maintain the professionalism and avoid a conflict about the family member. So that is what the importance of a good governance into a very family. ये एक hierarchy है जो मैंने create देखी, that a Bidla family, you know the Bidla family has been splitted. If they have not been splitted, they will be bigger than Adani's and Ambani's today. Because they have been splitted off, their worth has been diluted among all the verticals and among all the family members, and then gradually they have developed. Out of them, few are doing good, pretty good, but there are few people who are still struggling for that purpose. So that is the advantage through which a succession can get. If we are properly aligned, then we can definitely create. So Bidlas are the very old rich families of Jaipur. They're the most oldest rich family of the Jaipur, before the Tata and Ambanis. And definitely अगर इनके पास में एक proper structure अगर उस time पे align रहते and they won't be separated, then this will give a better structure till now also. So how to begin with it? Now the question arises, जब भी हमारे practitioner के साथ में जब मैं discuss करता हूँ तो बोलते हैं कि अब तो बात तो हो गई, but हमें क्या करना है, तो हम सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं, पहले आप उसकी क्लैरिटी लीजिए. सक्सेशन ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं हम हमारे क्लाइंट्स के लिए, हम उनका विजन मिशन बिजनेस प्लान बना सकते हैं, हम एक क्रिएट कर सकते हैं उनका एक बिजनेस बोर्ड, हम एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, हम उनकी ग्रूमिंग ऑफ द सक्सेसर्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं, उनकी विल बनाने में, ट्रस्ट बनाने में, उनको रजिस्टर करने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी वेल्थ एडवाइजिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी आईपीओ प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड थ्रू व्हिच वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन हेल्प आवर क्लाइंट फॉर द सक्सेशन प्लानिंग. How to continue this? So basically, once you have provided these services, they need your services more. For example, smooth conduction of their family board meeting, or the compliance of their family office, or the taxability of their family office and their founders, management of their wealth, documentation, drafting, and arrangement of the different document which has been generated during this process. So they all need us. So what we have to do is, presently, we have to put forward our client list in front of us. अभी अपने clients के साथ में जो भी अपनी list है उस list के साथ में बैठते हैं, analyze करते हैं that who all are, what is the present situation.
अगर आज की डेट पे अगर मैं सक्सेशन ड्यू डिलिजेंस करूं इन क्लाइंट्स के अंदर, अगर आपके पास में 50, 100, 200 जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट लेके बैठेंगे, तो जो भी उसमें से टॉप लोग हैं जिन लोगों ने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली है, तो सबसे पहले आप उनको सॉर्ट कीजिए, उनको बोलिए चलो हम सक्सेशन ड्यू डिलिजेंस करते हैं आपकी। दिस इज द फर्स्ट चार्ट दैट वी कैन मेक टू अवर क्लाइंट। सेकंड, आप उनका फैमिली मैट्रिक्स और लेगेसी समझिए कि फैमिली मैट्रिक्स और लेगेसी क्या है। 5 स्टेप अप्रोच में उनको अलाइन कीजिए, उनका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाइए, कोलैबोरेट कीजिए इस इकोसिस्टम के अंदर। जो मैंने आपको बताया था, ये इकोसिस्टम क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कोलैबोरेट कर लेते हैं अपने आप को इस इकोसिस्टम के साथ में, दैट हेल्प यू टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। एंड देन पोजीशन एज अ बियॉन्ड कंप्लाइंस एडवाइजर। Position yourself as a beyond compliance advisor. Compliance is something which is limited, but beyond compliance advisory is something that you are going beyond and you are helping a client other than a compliance as well, which is very important. So the ecosystem which I was talking about, come and become the part of this ecosystem. This is my wish, this is my prayer, this is my request, this is my genuine heartfully request to all of our professional colleagues. Come and become the join this ecosystem, where the CAs, advocates, trusteeship companies, insurance brokers, wealth advisors, investment bankers, they all are coming together and provide a service to the client, through which we are able to serve the client in a better way. For today's, I'm thank you for your patience listening. So a special gift to all of you. You can quickly scan this code. I'll give you a summary of my book along with a checklist, which will help you and your clients to deal with the succession in a right way. So the fourth edition of my book has always been there. You want to go buy that book. This is available on the Flipkart, Amazon, Textman, everywhere. But my first request is that get this summary, understand, and how you can directly implement it to our client is more important than anything. So it is important to understand that how we are able to establish this to our client, how we are able to apply this to our client. So by this, I'll keep my presentation short and sweet, and I've concluded till here. Anything, any query that anybody wanted to ask, I'm open to answer. And thank you again to the committee, to all the people, and my MOC moderator for helping me and driving me this wonderful conversation. Thank you so much. Any questions if we have right now? Okay, thank you everyone for joining us today in this insightful session. Yeah. I hope my conversation went well and it was clear till the end. Yes, sir. Totally. It was totally clear. Thank you. Thank you everyone for joining us today in this insightful session on business succession planning, importance for MSMEs. At the outset, I extend my heartfelt gratitude to our distinguished speaker, C. Ravi Mamodia, for sharing his valuable knowledge and practical insights, which have certainly broadened our understanding on this crucial subject. I'll also like to thank the Committee on MSME and Startups, ICI, for giving us this wonderful platform under the MSME Pathshala series. With this, we formally conclude today's webinar. Thank you again, and would forward look at your presence in the upcoming sessions on the MSME. Have a great evening ahead. Yeah, there's a few questions that has been put up. Let us check out those questions. Thank you Sure. so much, Neil Bhai, for a wonderful convening of this. So, first question, I don't think that it is for me, but second question, had all the family should keep this allow and prepare. It is not one day exercise. I 100% agree with this point of view that this is a long exercise and one should has to plan it well. They have to give some time and devote a regular time into it. Then only they are able to plan it well for their family. It is not at all a one day exercise. It takes time. It takes a lot of brainstorming. It takes a lot of disagreements. It takes a lot of conflicts. It creates a lot of other things into a family. And I always advise to keep and do it on the time so that you have that reasonable time in your hand where you can make the things and structure into a right. If any land registration pending dispute, is there can be executable? Registration, if it is a pending, then I think the transfer of that asset has not happened for that person. If that transfer has not happened, then that person is not the owner of that property. In that case, the person cannot transfer that property by way of will. Only those property who are mine, I have already acquired. They have been into like with my
with my tax paid income, I have my income out of my tax paid income, and then I have spent it by creating a wealth onto it. That wealth only can be transferred. The property which has not been registered till now cannot be transferred by way of will. One person executed will for the proprietor on his name. The legal here disputed the properties. Sorry, I'm skipping it. Properties among themselves as per their understanding, and by passing the will, whether the registration required for the property and what is the tax implication. I'm not getting a question here. Mahir bhai, can you explain this question number 4 better? How does the succession planning differ between the family owned and businesses and professional firms? Very nice question. Family owned businesses are having a different structure than a professional firm. Family owned businesses always have a possession of their emotions also. In a professional setup where there's a professional way through which the succession is done, so there's a somebody who's going to always be the part of that, and that can be done by the professional HRs also. But into a family succession, it is very important to establish this first, because this will help them to direct in the right way. This will help them to create a right kind of structure into the family member itself. How does the succession planning help in the risk management? Once the succession planning is done well, then the risk can be managed by creating a right kind of insurance policies for the family, right kind of risk advisory to the family. So first we have to understand that whenever we are advising to our client, we have to see the things into a 3 format. One is what law says, second what is the business risk, third is what is our solution to it. So for example, the inheritance law has allowed the equal right to a female. The female is having an equal right. The daughter is also having an equal right into your property. That is good. This is the law. Second, if this is there, that might create an interruption to your business if the daughter or their children will become a part of it and they wanted to create a dispute. So what is the better advice? That create a proper structure of your family business. Create a proper will into your family business. This is how we are able to manage the risk of that family owned business in a proper way. How an effective succession planning improves the firm valuation? Because the firm valuation got increased by creation of a proper structure. A generational business always get a better valuation. I have already explained you by creating a Boston Consulting example that if we have a planned transition, that creates a goodwill into a market that always been valued well. When you have a system where 3-4 generations has already been working and there's a well-defined structure among them, then people know that this will go for the generation. When people know that this will go for the generation, there is a better valuation of that company. Rather, I'll give you a reverse example of it. There are many promoter of mine who have been we are consulting with. The investor, the private equity haven't invested in them because there is no defined structure into a family. And they see there's a lot of challenge into it because there might be a dispute. If you wanted to get a proper valuation, define the things into a right and systematic way. This will automatically give you a good edge to get the investment and get the right kind of valuation into your business. When a corporate job pay more, why someone should join the practice? I think the practice is something that is a long term. That will give always a long term advantage to you. How does the succession planning encourage the talent development within a practice? How does the succession planning encourage talent development within the practice? I didn't get this question. How can a mentorship program contribute to the effective succession planning? Mentorship programs will really help you because that will guide you that how you should take the things forward. Mentorship will help you that what the things are happening in the outer world other than your business, how the people are doing the things. Mentorship also gives you a guidance of best practices that is happening into a market. When you implement the best practices into your business, then definitely you'll get a proper success and defined way to reach it. How can a firm avoid a conflict among the partners or family member during succession while talking and communicating? The communication and mediation has become a very important tool. So I'll give you an example that there's a lot of family that approaches us. There's a lot of dispute into the family. The dispute among the brothers, dispute among the father and son. Once we get it into, we first go and identify that what kind of dispute are they into. Once we have understood that, then we try to mediate it first. When the dispute has been resolved, then only the succession plan can be structured well.
So before going into this, we give them a mediation service that will become a mediator for you, will remove the conflicts among you. Once the conflict has been resolved, then we'll move to the next level, which is sorting up the things, which is creating a right kind of structure for you, which will be more advisable and which will be more happy for your family. So I think I've addressed almost all the questions. So thank you for the wonderful listening once again. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone, especially Ravi, sir, for just giving this beautiful session, and the insights we got from it was really helpful in our journey ahead. Thank you so much. Thank you, sir. Hello? Yes. Yes, sir. Over. Yeah. Yes, sir, done. Thank you. Okay. Thank you.